Hello everyone, welcome to today's class. So in today's lecture we are going to study about the heating effect of current. So we have already studied about charges, current, resistance, battery. These all things we have already studied. So now moving on to what is the heating effect of current. It is a practice you might have seen that जब भी हमारे घर पे कोई बल्ब है, ठीक है, वो चलते चलते सडनली बंद हो जाता है. So what is the practice कि हम एक क्लॉथ लेते हैं या we take a towel एंड उसकी हेल्प से हम उस बल्ब को रिमूव करते हैं और दूसरा बल्ब अप्लाई करते हैं वहां पे. सो हम ऐसा क्यों करते हैं? टॉवल से उस बल्ब को क्यों रिमूव करते हैं? क्योंकि वो जो बल्ब है वो क्या हो चुका होता है? हीटेड अप हो चुका होता है. द बल्ब इज हीटेड अप. ठीक है, बल्ब जो है वो गर्म हो चुका है. अब ये बल्ब गर्म क्यों होता है? सो लेट अस स्टडी दिस. द रीजन कि जो बल्ब है वो गर्म क्यों हुआ है. We know that cell or a battery is a source of voltage, ठीक है, source of potential difference. तो सेल में क्या होता है या बैटरी में क्या होता है? It contains some chemical, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन होती है. Because of this chemical reaction, the potential difference is maintained between the two terminals. ठीक है, दो टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो मेंटेन रहता है. एंड दिस पोटेंशियल डिफरेंस, इस पोटेंशियल डिफरेंस के मेंटेन रहने की वजह से जो करंट है दैट फ्लोज, दैट इज द चार्जेस और द इलेक्ट्रॉन्स, दे फ्लो. सो व्हाट इज द मेजर रोल ऑफ द केमिकल? द मेजर रोल ऑफ द केमिकल इज the chemical reaction takes place inside the cell or a battery. Because of the chemical reaction, the potential difference is maintained between two terminals of the cell or two terminals of the battery, and due to the potential difference the charges flow. This we have already studied when we were studying electric potential and potential difference. So this is a small short recap. So now what happens that the cell or a battery, it continuously supplies energy. Okay, it continuously supplies energy. Now this energy, how is it used? First use of this energy, it is a useful, the energy is used, for example there is a fan. Okay, so energy जो है वो कहां पर यूज हो रही है? उस फैन की जो ब्लेड्स है उसे मूव करने में. So the first use of the energy which is supplied by the cell or a battery is, जो first use क्या है कि जो फैन है या कोई भी जैसे फॉर एग्जांपल अ मोटर, ठीक है, उसे रोटेट करने में, या फैन है तो उसकी ब्लेड्स को मूव करने में. सो फर्स्ट यूज इज इट्स टू मेंटेन द मैकेनिकल मूवमेंट. ओके, या फिर जो बल्ब है तो बल्ब क्या करता है? ग्लो करता है, ठीक है, लाइट देता है. सो द एनर्जी, द केमिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू द मैकेनिकल एनर्जी अगर हमें कोई चीज मूव करनी है, या फिर वो केमिकल एनर्जी इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी. मतलब किसी भी यूजफुल तरीके से हम क्या करवा रहे हैं? उस एनर्जी को कन्वर्ट करा रहे हैं. ठीक है, अब ये जो केमिकल एनर्जी है इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो रही है, एंड दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी एंड लाइट एनर्जी. ठीक है, तो ये तो हो गया कि इसका यूजफुल आउटकम, ठीक है, उसका यूजफुल रिजल्ट कि जो काम हमें करवाना है वो काम हम करवा पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी. नाउ इसके अलावा भी ये एनर्जी कहीं पर यूज होती है. कहां पर यूज होती है? सो अपार्ट फ्रॉम दिस यूजफुल मोटिव, द एनर्जी इज ऑल्सो एक्सपेंडेड in the form of heat. So some amount of energy, जो एनर्जी हमें सेल या बैटरी से मिल रही है उसमें से some part of the energy हम यूजफुल पर्पस के लिए यूज कर लेते हैं, and some part of the energy is expendable. It is the expendable energy in the form of heat.
ठीक है, कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी जो है वो स्पेंड हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है, हीट के फॉर्म में निकल जाती है, हीट एनर्जी के फॉर्म में। मतलब कि अगर हम एक इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करें, ठीक है, टॉर्च की बात करें, ठीक है, टॉर्च में क्या होता है, सेल होता है, सेल में क्या है, केमिकल, सो द केमिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी अलोंग विद सम हीट एनर्जी। तो ये जो हीट एनर्जी जनरेट हो रही है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बिकॉज ऑफ द करंट, करंट की वजह से ये जो हीट एनर्जी जनरेट हो रही है, दैट गिव्स द नेम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। तो करंट की वजह से जो हीट एनर्जी जनरेट हो रही है दैट इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। अब कोई ऐसे डिवाइसेस, हर एक डिवाइस में रेजिस्टर्स होते हैं, ठीक है, रेजिस्टर्स होते हैं। अब कोई ऐसा डिवाइस जो कंप्लीटली रेजिस्टिव है, मतलब उसमें जो रेजिस्टर्स है बहुत लार्ज नंबर में है, सो इफ अगर लार्ज नंबर ऑफ रेजिस्टर्स है देन द हीट प्रोड्यूस्ड विल बी लार्ज, ठीक है, जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो भी क्या रहेगी, लार्ज रहेगी। सो समझ में आया कि ये हीटिंग इफेक्ट क्यों बोलते हैं, बिकॉज द एनर्जी जो है, जो हमें सेल या बैटरी से मिल रही है, वो एनर्जी हमें हम स्पेंड कर रहे हैं टू डू सम यूजफुल वर्क and along with that useful work the energy gets converted into heat, okay. Next is the joule. Now moving on to Joule's law of heating. Consider some current I flowing through a resistor R, okay. The potential difference across the resistor is V, okay. The potential difference across the resistor is V. Let the time be t, okay, and the charge be q. Q charges are flowing in t time. So the work done will be, we know V equals to W upon Q. Work done will be V into Q, okay. And the power, what is the definition of power? Rate of doing work. Power is equal to work done upon time, okay, or we can say power is equal to energy upon time. What is energy here? It is the heat energy. So we can say power equals to H upon T, okay. So taking this, power equals to work done upon time, substituting equation 1 in equation 2, substituting 1 in 2, in place of W, work we write as V into Q. Power equals to VQ upon T, okay. We know that I is equal to Q upon T. Substitute 4 in 3. I equals to Q upon T. तो यहां पर Q upon T की जगह हम क्या लिख सकते हैं, I. So P equals to V into I. Power equals to V into I. Okay. We know that V is equals to IR. Substituting 6 in 5. V की जगह क्या पुट कर देंगे, IR.
IR into I power is equal to I square R. Okay. Now we know that V is equals to IR. So I will be equal to V upon R. Okay. This is 7. Substitute 7 in 5. This equation we are going to substitute here in the place of I. So P is equals to V into, in place of I we are going to write V upon R. So P is equal to V square upon R. These are the three equations for the three formula for power. Okay, P is equals to VI, P is equal to I square R, and P is equal to V square upon R. Now we know that P is equal to H upon T, energy upon time from here. So energy will be equal to power into time. Okay, when we multiply power by time we get energy. So H is equal to, what is the power in first case? V into I. So VI into T, we get energy. Power in the second case is I square R, substituting in place of P, I square R and T as it is. This is the second formula for energy. And power is also equal to V square upon R into T. So this is the third formula for energy. So these are the three formula for energy and the three formula for power. Now what is the Joule's law of heating? So Joule's law of heating we get from this formula. H is equal to I square RT. Okay. So now let's see what is the Joule's law of heating. So according to the Joule's law of heating, the heat produced in a resistor, okay, we have already seen that Joule's law of heating comes from the formula H is equal to I square RT. So the heat produced in a resistor is directly proportional to the first square of current. Okay, so heat produced is directly proportional to the square of current I square R. Second one, the heat produced is directly proportional to the resistance, because the formula for heat is I square RT. So heat is directly proportional to I square, directly proportional to R, and directly proportional to the third one is the time. So this is the Joule's law of heating, that the heat energy produced is directly proportional to the square of current, directly proportional to the resistance, and directly proportional to the time for which the current is flowing through the resistor. Okay, so this is the Joule's law of heating, and that which we did earlier was the derivation for the Joule's law of heating. So we can get a direct question, state and derive the Joule's law of heating. So in state you need to write the statement for Joule's law of heating, and in derive you need to do the complete derivation. Okay, so this is all with today's class.